Hi everyone, how are you? Okay, dears, this is RANA Sir. Welcome to our RANA Sir educational channel. Today I will talk about application of energy, and also equation of motion to solve some numericals which are important. Therefore, you concentrate on this live video to understand the application of energy and also application of equation of motion. Okay, students, so you concentrate on this live video from starting to end to update your knowledge on this topic, and simultaneously you like this live video and also share this live video with your colleagues, friends and students so that they can also update their knowledge on this topic, and simultaneously you subscribe this educational channel more and more. Okay, student, now one additional information I am going to tell you, and you have to follow it actively, properly and safely. That is, first of all, you have to take one notebook and one pen, and then you have to sit at your location properly, positively and safely to write all data which are available on the blackboard, and also those informations which are spoken by me. Okay, student, now positively I am going to start it and you concentrate here. Okay, now first of all I will write and also explain all data in English, and then I will translate all those informations into in Hindi. If I will explain all data in English, it means that students who are reading in CBSE board are in English medium, those students can understand its concept in detail. Okay, now later I will also translate all those informations into Hindi, so students who are reading in Hindi medium are in UP board, those students can understand its concept in detail. Okay, now here I am going to write one question, and then I will apply the concept of energy and also concept of equation of motion to solve the numericals. Okay, students, so first of all I am going to write its numerical. Now calculate the work done when an object an object which moves from x is equal to 0 meter to x is equal to 2 meter, and
that object has velocity v is equal to a into x to the power 3 by 2 meter per second, and this object has an acceleration I am writing clear object, and this object has an acceleration 5 meter per second square. So these are the information, and we have to calculate work done. Okay. So here I am going to say there is one object which is moving with a velocity, and that velocity is given in the form of function. So we have to calculate the work done. That object is moving from x is equal to 0 meter to x is equal to 2 meter. During that duration, we have to calculate work done. Okay, before explaining the concept, I am also going to explain the concept of energy. Now, energy divided into two forms. Yeah, energy has two forms. One is the work, and another is the heat. One is the work and other is the heat. So in the form of work, we can say work is also defined as the product of force into displacement, that is called work, and heat is also defined with the concept that is Q divided by T, that is heat. Now the work energy is divided into two parts, that is energy has two forms. One is the work and another is the heat. Okay, now here we have to also explain energy in the form of E is equal to, here I will write E is equal to mc square. This is the formula which is given by the Albert Einstein, that is the scientist Albert Einstein. If I will take any object, that object will have a certain mass. Now that object will move with a velocity of light in vacuum. Its value is also given, that is by laboratory, 3 into 10 to the power 8 meter per second. This is the velocity of light in vacuum, that is c is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. When I will take a object and that object will have a fixed mass, and this is the fixed value of c, so I will take the product of these two physical quantity, so I will get a value, and that value will also be a fixed. It means that a system, in that system, mass of that object, I am calculating energy of this system. Energy of this system I am getting constant. If, in other words, we can say that this is a system. SYSTEM. This is a system. If energy of this system is constant, it means that there is no any external force which is acting on the system. It means that there is no loss of energy, yet there is no loss of informations, yet there is no loss of data. In other words, we can say that, so all momentum of that system will be constant because energy is constant. So this is the information which is given by the
Albert Einstein, that is E is equal to, he is given a formula, that formula is written as E is equal to mc square. He has generalized all concept in one sentence, and that sentence is as: energy cannot be created, cannot be destroyed, only converted from form to another form. In other words, we can say that I am going to explain also, translate its concept in Hindi. So student who are reading in Hindi medium or student who are reading in UP board, those student can understand its concept clearly. Because energy cannot be created, इट मीन्स दैट ऊर्जा को हम क्रिएट नहीं कर सकते, हमारे पास अथॉरिटी अधिकार नहीं है। दूसरा इंफॉर्मेशन उन्होंने ऐड किया, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब नाश या खत्म करना। एनर्जी को हम नाश या खत्म नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वी हैव अथॉरिटी टू कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट वी कैन नॉट क्रिएट या वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द एनर्जी। ओके, तो एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ अथॉरिटी या अधिकार है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का। दीज आर द इंस्ट्रक्शंस which are given by the which is given by the Albert Einstein. Okay, so all those informations I have explained with the help of this formula, that is E is equal to mc square. Okay, so energy has two forms, one is the work and another is the heat. Okay, so if I will take any object and that object will have fixed mass, and c is the velocity of light in vacuum, and its value I have got from the laboratory. C is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. When I will multiply this value with mass of object, so I will get a fixed value, and that value will be constant. It means that whole system will have a fixed energy, and that energy is constant. There is no loss of energy. Okay, now so this concept I will use in this question to solve and to get its value. So you concentrate here. If you are understanding all these concepts clearly, so you like this live video, and also you share this live video with your colleagues, friends and students, so that they can also update their knowledge on this topic, and simultaneously you also subscribe this educational channel more and more. Okay student, now here I am also going to translate all those informations into Hindi, then I will give its concept, I will give its solution, and student who are reading in Hindi medium, those student can understand concept in detail. Okay, इस क्वेश्चन में कहा गया है कोई भी वस्तु है, जब कोई भी वस्तु, ऑब्जेक्ट के हिंदी होता है वस्तु। जब कोई भी वस्तु जो होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है, पॉइंट ए पर जो होता है, मान लें कोई भी पॉइंट ए से जो जेड तक कोई भी अल्फाबेट है, उसको आप नोट कर सकते हैं। सपोज के पॉइंट ए पर जो होता है 0 मीटर पर 0 मीटर कंसीडर किया गया है, लेकिन पॉइंट बी पर जो होता है 2 मीटर होता है। तो बिंदु ए से बिंदु बी तक मूव किया है, तो उस केस में वहां पर कार्य करना पड़ा होगा, क्योंकि कार्य जो होता है, हम एनर्जी ऊर्जा के दो फॉर्म होते हैं, एक जो होता है कार्य होता है और दूसरा जो होता है उष्मा होता है। तो कार्य और उष्मा, जब एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे तो उसमें कार्य करना पड़ेगा। वो जो किसका फॉर्म होता है, वो ऊर्जा का, जिसको इंग्लिश में एनर्जी करते हैं। तो कहा गया है जब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो वस्तु मूव कर रहा है, तो उसका वेग होगा। वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं, उसका भी वेग होगा। लेकिन वो वेग के लिए जो होता है डायरेक्ट वैल्यू न देकर वह एक फंक्शन दे दिया गया है, वह एक्स के फंक्शन में दे दिया गया है। अब कहा गया है कि वह वेग जो होता है बराबर a इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 मीटर पर सेकेंड, इस माने एक वेग के फॉर्म में उसके वेव को कैलकुलेट दे दिया गया। अब कहा गया है कि उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन भी है, एक्सीलरेशन का हिंदी होता है त्वरण। त्वरण दे दिया गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो उसमें जो होता है कितना वर्क डन करना पड़ा है, उस वर्क डन को फाइंड आउट करना है। इसलिए ये क्वेश्चन जो होता है ऑलरेडी क्लास 11 के एग्जाम में पूछा गया है। ओके, सो आई एम गोइंग दिस कंसेप्ट क्लियरली सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली।
तो हम यहाँ पर समझ गए हैं कि कार्य ऊर्जा के दो रूप होते हैं, एक जो होता है वर्क होता है, दूसरा जो होता है ऊष्मा होता है। तो वर्क और ऊष्मा दो होते हैं, तो वही जो होता है यहाँ वर्क डन पूछा गया, इसका मतलब ऊर्जा पूछा गया। ओके, नाउ यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक फार्मूला दिया एनर्जी के रूप में, एनर्जी के लिए, एनर्जी मीन्स ऊर्जा के लिए, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसका मास जो होता है फिक्स होता है, द्रव्यमान फिक्स होता है। और यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर एक चाल होता है, ये प्रकाश की चाल होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है दिया गया है लेबोरेटरी से लैब से हमने पाया है कि C बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो अगर ये मास जो होता है, द्रव्यमान जो होता है फिक्स होता है, ये भी वैल्यू फिक्स है। दो फिक्स वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हम कांस्टेंट पाएंगे। इसका मीनिंग होता है कि जिस सिस्टम में मास है उस सिस्टम का मास में किसी तरीके के उसकी ऊर्जा में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग यह होगा कि उस सिस्टम का एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब उस सिस्टम का एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मीनिंग यह होता है कि उस सिस्टम में किसी तरह का इंफॉर्मेशंस या किसी तरह का डाटा का परिवर्तन नहीं हो रहा है। दिस इज द सिस्टम ऑफ द एनर्जी। उस सिस्टम के एनर्जी में किसी तरीके का परिवर्तन नहीं होता है। इसका मीनिंग यह होता है कि हम कह सकते हैं उसमें न तो इंफॉर्मेशन का चेंज हो रहा है, न तो कोई डाटा का चेंज हो रहा है, किसी तरीके का परिवर्तन नहीं है। जैसे पहले था वैसे अब पर भी रहेगा। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टीन ये इंफॉर्मेशन को हम पाए। ये सारी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट जनरलाइज करके उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक थॉट दिया, दैट इज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, ये नेचुरल चीज है, ये नेचर ने एनर्जी को बनाया है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी को हम नाश भी नहीं कर सकते हैं, खत्म भी नहीं कर सकते हैं। बट ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास ये डेस्टर है, यह डेस्टर जो होता है इसमें भी एनर्जी है। यह एनर्जी हमारा, यह एनर्जी जो होता है इस डेस्टर के फॉर्म में, एनर्जी जो होता है डेस्टर के फॉर्म में अवेलेबल है। इसको अगर मार्केट में सेल करेंगे तो वह एनर्जी जो होता है डेस्टर के फॉर्म से कन्वर्ट हो जाएगा मनी के फॉर्म में। तो हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करें, फिर से उस मनी को फिर से कन्वर्ट करेंगे, दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु खरीद ले रहे हैं तो दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या, हमारे पास अथॉरिटी है सिर्फ वस्तु के एनर्जी को वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का। दिस इज द अथॉरिटी व्हिच इज गिवन बाय गॉड, बट गॉड हैज ओनली इंफॉर्मेशन। गॉड हैज अथॉरिटी टू क्रिएट एनर्जी, डिस्ट्रॉय एनर्जी। दिस इज द अथॉरिटी ऑफ द गॉड. These are the authority of the God. Only I have only one authority. Only we have to convert energy from one object to another, from one to another. एक से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम उसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूटिलाइज करना, यूटिलाइज करने के बाद से इसके सब प्रोवाइड करना। ओके स्टूडेंट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू इरेज this concept, and after erasing this concept I will also give its proper solution. Okay, first of all I have to write here solution. First of all I have to write here solution. Solution will be H. Given that I have to write here information, given that mass of that object is also available. I am going to add here mass of the object is also given. Mass of the object is 0.5 kg. So I have to put there. So given that mass of the object, I will say 0.5 kg, and velocity is given, that is v is equal to a into x to the power 3 by 2. Now we have to consider velocity at
X is equal to 0 to X is equal to 2 meter. X is equal to 0 meter to X is equal to 2 meter. Now, and acceleration of the object is also given, that is A is equal to 5 meter per second square. Okay. So all these informations I will also represent in diagram, that is in pictorial form, so student can understand its concept easily. So here I am going to take one object. I am going to take here one object. Now here there is no extra space, so I will make its diagram like this. OBJECT. This is the object, and it has mass. It is moving on a horizontal line. It is moving on a horizontal line. So its center is at this point. I am saying A. Center is available at the point A. Now at X is equal to 0. At X is equal to 0 meter. At S is equal to 0 meter, the object is available at here, but its velocity is given A into X to the power 3 divided by 2 meter per second. That is written here, meter per second. Now this is the object that is located at point A, and the coordinate, X coordinate point A is X is equal to 0 meter. Now with this velocity, that object is moving. That object is moving here, and I can say that this is the initial velocity. I have to write here U. It is moving. After moving, it is reaching at point B. So object, OBJECT, object which is available at the point B. Center of this object is B. So here X coordinate of that point B is 2 meter. METER. 2 meter. Here I have taken 2 meter. Now this is the object. I am going to hatch it, so its diagram will look like this. Okay. So this is the same object. So I am hatching it like this. This is the object. Okay. Now this is the object which is available at the point A, and its X coordinate is 0 meter. Now it is moving with velocity A into X to the power 3 by 2 meter per second. So after some time it will reach at the point B, and its X coordinate will be 2 meter. 2 meter. So we have to find work done. So I already explained with you. Work is one part of the energy. So in this object, movement is available. So there will be kinetic energy. If any object which has no movement, but that is located at a point, so I will say that object will have potential energy, because energy is also divided into two forms. One is the kinetic energy and another is the potential energy. So kinetic energy means object will have movement. So this object is moving from one point to another point. It means that I can say that this object has the concept of movement. That is, this object has motion. So in this case, I will say that object will have kinetic energy. But any object which is available at a fixed point, it means that there is no movement. So I will say, due to position, I will calculate the kinetic energy. Okay, so here this object is moving. It means that this object has movement. So I have to calculate here kinetic energy. Okay, students, so you concentrate here. I'm going to explain it in detail. Okay, so before
explaining all these informations, I will also explain in Hindi. So students who are reading in Hindi medium, those students can understand its concept in detail. Okay. Now ये क्वेश्चन जो टाइप किए हैं, लिखे हैं, तो इस क्वेश्चन में जो होता है हम एनर्जी के कंसेप्ट को यूज करेंगे और उस एनर्जी के कंसेप्ट को यूज करके इसमें जो वर्क डन जो रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन का वो हम कैलकुलेट करेंगे। ये ऑलरेडी क्वेश्चन जो होता है क्लास 11 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, यू हैव टू कंसंट्रेट हियर एंड हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स कंसेप्ट। ओके, नाउ हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं कि ऊर्जा जो एनर्जी का हिंदी होता है ऊर्जा, तो एनर्जी के दो फॉर्म होते हैं, एक जो होता है कार्य होता है और दूसरा जो होता है ऊष्मा होता है। इंग्लिश में जो होता है वर्क और हीट के नाम से जानते हैं। ओके, तो अगर वर्क और हीट के नाम से जानते हैं, इसका मीनिंग क्या है, वर्क डन पूछा जा रहा है, इसका मीनिंग ये होता है वो ऊर्जा पूछा जा रहा है। तो ऊर्जा के लिए एक्सप्लेन करेंगे कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था E बराबर mc²। इसका मीनिंग ये होता है कि जिस सिस्टम में ही जो होता है कांस्टेंट होता है, मींस उस सिस्टम का एनर्जी जो होता है कांस्टेंट होगा। इसका मीनिंग ये होता है उस सिस्टम में किसी तरह के इंफॉर्मेशन या डाटा का परिवर्तन नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। नाउ एनर्जी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु में गति है, मोशन है, तो उस केस में जो होता है काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, जिसको गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और जिस ऑब्जेक्ट में पोजीशन पर स्थिर है तो उसको स्थिरित ऊर्जा, चाहे इंग्लिश में उसको पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानेंगे। तो अब इससे आपको कंफर्म हो गया है कंफर्म हो गया होगा कि उस गति है कि नहीं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट जो होता है किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर गति है। जब गति है तो हमको पोटेंशियल एनर्जी नहीं कैलकुलेट करना, हमको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। ओके स्टूडेंट, सो ऑल दीज इंफॉर्मेशंस आई विल यूज इन द numerical to calculate its requirement. A requirement is work done, that is the kinetic energy. Okay students, so you concentrate here. Above data I will erase and then I will give its appropriate solution. Okay, because here there is no extra space though, so I will erase above data because all data I have already written in the diagram. Okay, so I will use those data from the diagram, therefore above data I will erase. So you concentrate here positively, I am going to erase it. Now here mass of object is given, velocity is also given in variable form, acceleration is given. So here according to the velocity I can write in the place of v, I can write here u. Okay, so when u is equal to a into x to the power 3 by 2, so a is also given 5 meter per second, so here I will put here 5 in the place of a, 5 x to the power 3 divided by 2. When at point A x is 0 meter, in this case I will calculate velocity. It means that I will write u0, so I will put in the place of x0 3 by 2. It means that 5 into this value will be 0. So if I will multiply 5 into 0, that will be 0. It means that if any quantity which is multiplied with 0, that quantity will be 0. So u0 I will calculate, so its value will be 0 meter per second. It means that here I am getting its value 0 meter per second. Okay student, now it is moving from point A to point B when x coordinate is 2 meter. Okay, so that information I will also calculate. When I have substituted x is equal to 0, so I have got initial velocity that is 0 meter per second. So in this case kinetic energy will be 0. Okay, now kinetic energy, each and every students are knowing the formula. Kinetic energy K is equal to 1 by 2 m v square. So velocity, initial velocity is 0, so
kinetic energy will zero at the point A. Okay. Now here when I will put x is equal to 2, x is equal to 2, because this is available in the form of h, I can write I can write u of x. So here I have to put the value of x. After substituting, I have got its value 0 meter per second. Now when I will put the value of x 2, so each and every place I have to put 2. So 5 into 2 to the power 3 by 2. Okay. So again I will simplify here. 5 into 2 power 3, 2 to the power 1 by 2 I can write here. Okay. If you have any doubt, so write your doubt point here, query point in the comment section, and then you send. After sending, I will study all your informations in detail, and then I will give the query of your question in detail. Okay, student. Now further I am going to simplify. If you so you like this live video, and also you share this live video with your colleagues, friends and students, so that they can also update their knowledge on this topic positively. Okay, now you concentrate here. I'm going to resolve its solution. So here I can write, so here I will write 4 into 2. I can write 4 into 2, 4 into 2 power 1 by 2. In other words, I can write 5 into root 4 into 2. So I will take 5 and 4, I will take the square root of 4. In other words, I can write like this, square root of 4 into square root of 2. Further I will simplify. Here I will write 5, and here from here I will get 2. Square root of 4, that will be 2 into 2. So after simplifying, I can write here, that is coming u of 2. So here I will write u of 2, which I will put same 5 into 2 into root 2. So here I will write 5 to the 10 into root 2, and its unit will be meter per second. So at point B, when x coordinate is 2 meters, so I have got its velocity, that is final velocity, that is u2. u2 is, here I will write u of 2, which is equal to 10 root 2 meter per second. Okay, okay student, I have got the value of u of 2 at the point B, that is 10 root 2 meter per second. Now we have to calculate the energy, kinetic energy from point A to B. Initial energy, kinetic energy I have got, that is 0 meter, that is 0 joule. But at point B I have to calculate energy. I will get some value, and that value I will write, and that will be the required my answer. Okay, now I hope that all those informations you are knowing clearly. If you are knowing, so you like this live video, and also you share this live video with your colleagues, friends and students, so that they can also update their knowledge on this topic. Okay, if and simultaneously you subscribe this educational channel more and more. Now I am also going to translate all these informations into Hindi, so students who are reading in Hindi medium, those students can understand its concept in detail. Okay, now हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है वस्तु, जो ऑब्जेक्ट या वस्तु मूव कर रहा है उसका द्रव्यमान जो होता है 0.5 kg है, और उसका वेलोसिटी जो होता है में दिया गया x का फंक्शन है। अब कहा गया है जब x बराबर 0 से x बराबर 2 के बीच में जब मूवमेंट होता है तो उसमें कितना कार्य करना पड़ेगा, जबकि उसमें जो a दिया गया हुआ एक्सीलरेशन है, उसका वैल्यू भी दिया गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जब कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वो कार्य करना पड़ता है, लेकिन हम जानते हैं ऊर्जा के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है कार्य और दूसरा होता है ऊष्मा। तो कार्य कैलकुलेट करें चाहे ऊष्मा कैलकुलेट, दोनों का मीनिंग सेम होता है, क्योंकि ऊर्जा जो होता है, अगर ऊर्जा को भी हम डिफाइन करते हैं
तो उसका दो पार्ट में हम डिफाइन करते हैं। जब ऑब्जेक्ट के अंदर, वस्तु के अंदर गति होता है तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम हिंदी में गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और जब ऑब्जेक्ट में गति नहीं होता है तो किसी पोजीशन को होता है, स्थित होता है, उस स्थिति के कारण जो होता है स्थित ऊर्जा कैलकुलेट करते हैं, जिसको इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो उस पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इस वस्तु में, इस क्वेश्चन में जो सिचुएशन है, स्थित है, वह क्या है, ऑब्जेक्ट में गति हो रहा है। गति का मतलब मोशन है, इसलिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। बिंदु ए पर काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे तो 0 जूल आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं बिंदु ए पर जब वेलोसिटी मीन्स वेग का वैल्यू कैलकुलेट किए तो 0 मीटर पर सेकेंड होता है। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी को हमेशा, काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर हम लिखते हैं 1/2 m u स्क्वायर या v स्क्वायर। ओके, और इसका जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, उसको हम जूल के नाम से जानते हैं। तो बिंदु ए पर अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, वो काइनेटिक एनर्जी 0 जूल होगा, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गया, मास 0.5 है, वेलोसिटी कितना होगा, 0 का स्क्वायर, वो 0 हो गया, टोटल टर्म 0 हो जाएगा। उसी तरीके से बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो उसका कुछ वैल्यू आएगा। उस वैल्यू को आएगा तो दोनों में जो चेंज होंगे, काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू आएगा, वही वैल्यू जो होता है वर्क डन होगा। ओके स्टूडेंट, सो ऑल दीज इंफॉर्मेशंस आई हैव डिस्क्राइब्ड विथ यू। इफ यू हैव एनी डाउट, या आप कोई क्वेरी रख रहे हैं या किसी तरह का डाउट रख रहे हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को कमेंट सेक्शन में टाइप करें, लिखें और सेंड करें। आई विल रीड दोज क्वेरी in detail one by one, and then I will give the appropriate solution of your question in detail. Okay student, I hope that you are understanding all these informations clearly. Okay, now I will erase above information, and after erasing above information I will calculate kinetic energy at point A and also kinetic energy at point B, and then I will take difference, that will be the work done in the work done, and that work done is required in the written question. Okay, so above data I will erase, and after erasing I will calculate kinetic energy at the point A, and similarly kinetic energy at the point B. So I will write here, according to question ACCORDING, according to question, kinetic energy 1 at point A, kinetic energy 1 at point x is equal to 0, that is 1/2 m u square. So I will write here 1/2, and the mass is 0.5 kg, so I will write here 0.5 kg, and at x barabar 0 the velocity is 0 whole square. So after solving I will get its value 0 joule. Okay, so this is the kinetic energy K1, KE1, kinetic energy KE1 at point x barabar 0. Similarly I will calculate the kinetic energy at the point B. At the point B I will calculate kinetic energy at point B. Okay, so you concentrate here to understand. According to question I have also write, and here I will write kinetic energy 2 at x is equal to 2 meter. So I will write 1/2 m u square. So here in this case I have to write 1/2 the value of mass, which is given here 0.5 kg, so I will put there 0.5 kg, and value of u is available here 10 into root 2 whole square.
Okay, so this is the kinetic energy. I have to evaluate its value, that is 0.5. Here I will take its square, so 10, that will be 100, and root 2, that will be 2, divided by 2 is available, so 2 and 2 will cancel out. Okay, so here I am calculating kinetic energy 2 at x is equal to 2 meter. So I will write here 0.5 into 100, that will be 50 joule. Okay, that will be 50 joule. So I can write similarly, when I will multiply it, after multiplication I will write 50 joule. Okay, this is the kinetic energy at kinetic energy 2 at x is equal to 2 meter, and this is the kinetic energy at x is equal to 0 meter. Okay, so I will take difference from kinetic energy at point B minus kinetic energy at point A, that is x is equal to 0. So that difference will be the work done. So below data I will erase, and after erasing I will get the required solution. So work done will be kinetic energy 2 minus kinetic energy 1. So I will write 50 minus 0 joule. It means that is 50 joule. So this is the answer of my question. Okay, students, I hope that you are understanding all these informations clearly. If you have any doubt, yeah, any query, yeah, any issue related to this topic, so you write your information, yeah, query in the comment section, and then you send it. After sending, I will read, that is study in detail, and after study I will give the appropriate solution of your query, yeah, question in detail. Okay, student, if you are understanding all those informations clearly, so you like this live video, and also you share this live video with your colleagues, friends and students, so that they can also update their knowledge on this topic, and simultaneously you also subscribe this educational channel more and more. Okay, student, written question already asked in the class 11th physics exam. Okay, students, so this is very important, and you have to understand, because this question has clear concept and you have to know, because energy has two forms. One is the work and another is the heat, and energy can be also divided into two forms. One is the kinetic energy and another is the potential energy. Kinetic energy due to the motion in the object, and potential energy that is available with position. Okay, so each and every difference you have to know, and after knowing you have to apply formula to calculate the kinetic energy. If any object which has, that is kinetic energy 1 by 2 mv square, and object will be at position, in this case you have to write potential energy, that is mgh. Okay, so you have to follow it positively to write all those informations clearly. Okay, student, I hope that you are understanding this concept in detail. Now another question I will also write, and in that question I will use the concept of equation of motion to calculate the requirement. Student, so you concentrate here. I will erase diagram and also its solution, and then I will write one numerical, and that numerical is also important, that is also asked in the class 11th examination. So you concentrate here to understand the solution of that question in detail. Okay, so positively I am going to erase the solution of the previous written question.
Now here I am going to say, this is the question number 2. There is a object. There is an object which is located at vertically which is located vertically each meter height, and that object is falling from that height. That object is falling from that height. And reaching to the ground in 4 seconds. Find out that height. So this is the question, and I have written, and this question already asked in the class 11th exam. So you concentrate here how its solution can be given. Now a object which is located vertically each meter height, that is located each meter height. Now from that height, object is falling and reaching to the ground in 4 seconds. That object is falling from that height and reaching in 4 seconds. So we have to find that height. Okay. So before solving it, I will draw its diagram, and after drawing its diagram, then I will give its solution. So first of all, you concentrate here to understand its diagram. Now here I am considering Earth. This is the Earth, EARTH. Now here I am saying at each height, object is located. This is the object. Now object is located at each height. Okay, this is the object height. I have considered here each meter. Okay, now this object is falling from top to reaching to the ground. T is equal to 4 seconds. That is given in the question. So we have to find height of that object, from which location that object is dropping to the ground. Okay, so this is the information. These are the informations, and all these informations which are written in the question, that is in language, I have already represented in the diagram. Okay, so
Here I have already assumed one object which is located vertically h meter height. Now it is falling from that point to earth in 4 seconds. So we have to calculate what is the height, what is the height object is located. Yeah, what is the height of object was located. Okay, so that height we have to calculate. Okay, so all these informations I will also translate into Hindi, so student who are reading in Hindi medium, those student can understand this concept in detail. Okay, now यहाँ पर कहा गया है कि एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, वस्तु। इस ऑब्जेक्ट को हिंदी में वस्तु कहेंगे, वस्तु। जब कोई भी वस्तु जो होता है h मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और उस स्थित h मीटर की ऊंचाई पे स्थित है और उसको h मीटर की ऊंचाई से जब फॉल कराया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट जो होता है पृथ्वी की सतह पर 4 सेकेंड में पहुंच जाता है। तो ये कैलकुलेट करके या गणना करके बताना या परिकलन करके बताना है कि पृथ्वी की सतह से जब ऑब्जेक्ट जहां पर स्थित है उसके बॉटम के बीच की दूरी जो एच एज्यूम किए माने हैं वो एच का मान कितना होगा। ओके स्टूडेंट, आई होप दैट ऑल इंफॉर्मेशंस व्हिच आर रिटन इन लैंग्वेज फॉर्म आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इन द pictorial form. Okay, so you concentrate here, I'm going to give its solution in detail. Okay, so positively I have erased it. Now I'm going to say अगर ऑब्जेक्ट जो होता है जब h मीटर के हाइट पर, जब ऑब्जेक्ट h मीटर के हाइट पर लोकेट किया गया है तो जब ऑब्जेक्ट को जब नीचे फॉल नहीं हो रहा है तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। इस केस में जो होता है वो वस्तु जो होता है विरामा अवस्था में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। नाउ ऑल दीज इंफॉर्मेशंस आई कैन आल्सो एक्सप्लेन इन English, so student who are reading in English medium, that is CBSE board, those student can understand its concept clearly. Okay, if object which is located h meter height, so object is not moving, so its initial velocity will be 0. Now it is moving, that is from rest to moving to ground. In this case object will take 4 second time to reach the bottom of the this tower. We can say that tower, that is called in Hindi minar. So it will take 4 second time to reach the surface on the ground. Okay, so initial velocity will be 0. So I will use the concept of equation of motion to get when it will move at this point. So I will say according to third equation of motion. Here I will write according, ACCORDING, according to third equation of motion. Equation of motion. I can write v square is equal to u square plus 2as. Now final velocity will be v and initial velocity will be 0. So I will put here 0 square plus 2 acceleration. I have no any information about acceleration, so I will put here a. Now here yes means distance. If I will move horizontally, so I will say yes, and if I will move vertically, so I will say h is equal to as. So you have to know it. If I will move horizontally, so I will say, I will indicate yes x. But I will move vertically, so I will put there y or h. Okay, so you have to concentrate here. So in the place of yes, I can put here h. So v square, which is equal to 2ah. Okay, so I have got its value, that is v. I can write square root 2a into h. Okay, so I have written here. So I am putting like this.
Now we have to calculate this height. So I will also use first equation of motion to calculate the requirements because time is given. So I will write again according to first equation of motion. ACCORDING, according to first equation of motion. According to first equation of motion, I can write here. So I know V is equal to U plus A into T. So I can put V is equal to U plus A into T. So I know V, the value of V is written here. So I can substitute here. 2A H, I will write in square root. The value of U is 0, that is given in the diagram, because if object will not move, so initial velocity will be 0, that object is in rest. So I will put there 0. So here I will write A into T. So value of T is also given there. I will put here the value of T, that is 4 seconds. So I will multiply 4. Okay. So after simplify, I will get its value. So I will get its value. Now the value of acceleration I have to take 10. Okay, later I will substitute. So here there is no extra space, therefore I will simplify later. Okay, no issue. So all informations I have written, so all these informations I will translate into Hindi, so student who are reading in Hindi medium, those student can understand this concept in detail. Okay, यहाँ पर हम explain करेंगे कि न्यूटन के तीसरे नियम से हम जानते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे स्क्वायर क्लियर बनाए ताकि स्टूडेंट आसानी से समझ सके। तो यहाँ पर v स्क्वायर की जगह v स्क्वायर, जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, वस्तु मूव नहीं करता है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग 0 होगा। तो यहाँ पे 0, यहाँ पर एक जगह पर 2, और ये जो होता है एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन जो होता है जब वर्टिकली मूव होता है, एक्सीलरेशन जो होता है g में चेंज हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे एक जगह पर g भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यस जो होता है जब हॉरिजॉन्टली मूव होता है तो यस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब वस्तु जो होता है वर्टिकली मूव करता है उसको एच से रिप्रेजेंट करता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो v इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्सीलरेशन की जगह पर g जबकि वर्टिकल मूवमेंट होता है, ऐसे करेंगे v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gh हो गया। ओके, अब फिर से जो होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के पहले नियम से हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जब हम v का वैल्यू यहाँ से कंसीडर किए हैं तो a को हम कंसीडर किए हैं g है। ओके, तो u का मान 0 है, a इंटू जी। ए जो होता है यहाँ पर एक्सीलरेशन जो होता है, मूवमेंट जो होता है वर्टिकल है, तो एक जगह पर g यूज करेंगे। तो इस तरीके से हमने एक इंफॉर्मेशन यहाँ पाया जिसको इक्वेशन 1 कहेंगे, और दूसरा इंफॉर्मेशन या इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2gh का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू, हियर आई विल राइट 4 इंटू जी, इतना हम लिख सकते हैं। ओके, अब जो होता है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करने के बाद से हम g जो होता है, जब कोई भी बस जो होता है वर्टिकली मूव करता है तो g एक्सीलरेशन का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। ओके स्टूडेंट, ऑलरेडी जो होता है इसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्वेश्चन में दिया गया है। ओके स्टूडेंट, सो above data I will erase, and after erasing I will calculate its value. So you concentrate here how I am going to calculate it. Okay, so above data positively I will erase. तो यहाँ पर 2 into g into h which is equal to 4
जी। अब इस इक्वेशन को हमने टू एज्यूम किया है। अब इस इक्वेशन के दोनों साइड में हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इस स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ जो होता है हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद से हम पाएंगे। ओके, इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे 2GH का स्क्वायर किए और इधर हो जाएगा 4G का स्क्वायर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2GH, इधर लिख सकते हैं 4 चौक को 16 देते, 4 4 जब 16 इंटू जी स्क्वायर। ओके, फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम कहेंगे इसको इस साइड में रखेंगे तो एक जी जो होता है, एक जी से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे 2H which is equal to 16G, इसलिए H is equal to हम लिख सकते हैं 16G डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। हम इसको सिंप्लीफाई करके और फर्दर लिख सकते हैं H is equal to 8G, और G के वैल्यू जो होता है कैलकुलेशन इजी हो जाए, इसलिए G का वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर करेंगे। इसलिए ये चीज इक्वल टू जो होता है हो जाएगा 8 इंटू 10 दैट इज 80 मीटर। 80 मीटर ये हमारा आंसर हुआ। ओके स्टूडेंट, सो अकॉर्डिंग टू दिस वे वी हैव टू गेट इट्स सॉल्यूशन। दिस इज द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन। Okay student, I hope that understanding this solution clearly. Okay, so you like this live video and also you share this live video with your colleagues, friends and students so that they can also update their knowledge on this topic. And also you subscribe this educational channel more and more. If you are getting any doubt, any query, any issue related to this topic, so you type write your information in the comment section and then you send. After sending, I will study your information, that is your query in detail, and then I will give appropriate solution of your question in detail. Okay student, so you have to follow it positively because I will also translate all these informations into Hindi, so student who are reading in Hindi medium, those student can understand its concept in detail. Okay, अब इक्वेशन नंबर 2 दिया गया, इक्वेशन को हिंदी में समीकरण के नाम से जानते हैं। अब इस समीकरण 2 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएं चाहे राइट हैंड साइड में, दोनों पार्ट में रखें। इसके दोनों साइड में हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद से ये एक्सप्रेशन पाए, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 2GH बराबर 4 का स्क्वायर जो होता है 16 हो जाएगा और G का G स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से एक G और एक G कैंसिल हो जाएगा। जब एक G कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 2H बचेगा, राइट हैंड साइड में 16G होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूना 16 हो गया, 8G बचेगा। ये चीज इक्वल टू 8G होगा। अब G जो तक गुरुत्वीय त्वरण होता है, हिंदी में उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका मान लेबोरेटरी से पाया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी हम यूज करते हैं। तो G का मान जो होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिखे, इसलिए 8 को 10 से मल्टीप्लाई करें 80 मीटर आया। तो दिस इज द solution and you have to follow this step to calculate its solution like this. Okay student, if you are understanding all these informations clearly, so you like this live video and also you share this live video with your colleagues, friends and students so that they can also update, that is improve their knowledge on this topic. Okay student, I hope that you are understanding all these concept clearly. Okay, therefore I will say you have to like this live video and also you have to share this live video with your colleagues, friends and students so that they can also improve their knowledge on this topic, and simultaneously you have to subscribe this education channel more and more positively. Okay, now
I am going to terminate this communication with you. I will say some important information and you have to learn and know it positively. First of all, I am going to tell you if you need to learn mathematics from class 10th, 11th and 12th in English and Hindi medium. Already I have prepared data and you have to go in my video playlist section and you can learn easily from there. Okay, and if you have any doubt, so you write your doubt in comment section and then I will reply positively. Okay, now you want to also learn physics from class 10th, 11th and 12th, so you can also learn because all data I have already prepared and uploaded. From there you can learn easily. Okay, if you have any doubt or query related to uh, topic, so I will explain your requirement in detail positively. Okay, thank you for watching this live video. Always I will meet with you on the same time, that is 30 minutes past to 7 o'clock to 30 minutes past to 8 o'clock. Is numerical and time concept. If numerical and topic will take too much time, so I will give the time duration after completing the topic and concept, then I will terminate the communication with you, but I will start on the same time, that is 13 minutes past to 7 o'clock. Okay, so you have to follow this time slot positively. Thank you for watching. Jai Hind, Rana sir.